so that I can start my class. First of all, welcome to from the entire team of Gradeup, I would say. This is me, Salik, and write in the comment section that yes, I am audible and visible. Good morning, Tejal, Shalu, KP, Ja, Hansika, Mahalakshmi, Sarthak, Jyoti. Good morning. Write in the comment section. Yes, you are visible and audible, sir. My slides are visible. Good morning, Mahika, Anju. Visible and audible. Yes. Okay. People are writing that yes, I'm audible and visible. Okay. So let's start. As we all know that today we are going to learn about ASEAN. Sometimes people pronounce it as ASEAN, but ASEAN is the correct pronunciation. And this is the logo of ASEAN. And this is me, Salik, and we are going to start. So, but before starting, we have flat 50% discount on Gradeup Super for CLAT, SLAT, ILAT, MAH, SET exams. For that, use the code EARTH50. Okay. And yes, we have CLAT 2022 batches, and we have batch 4 for that. So please do join it. The earlier you start, the better is for you. If you are in class 11th or 12th, you are planning to attempt next year. So you have almost 1 year, or in fact more than that left. तो आप जरूर ज्वाइन करें. That will be very 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 beneficial. Okay. Yes, if you are preparing for any other law exams, for example BHU, BLAD, Jamia, Aligarh, or any other law entrance examination, you can join it. Sir, please take the class on quiet. Okay, okay. uh, yes. So for even CLAT 2021 also we have booster crash course, and that is batch 3. So hardly 2-3 months are left, so you can join that batch also. Okay. Now, yes. So for 2021, we have 4 months subscription, and for 2022, we have 14 months subscription for Gradeup Super. Okay. So stay home, stay safe, and do online education. So yes, why are we discussing about ASEAN? So first of all, ASEAN, SARC, BIMSTEC, and any other thing, for example, Brexit or European Union. These are, you can say, evergreen topic. I mean, why I'm putting these videos on YouTube? Because in the future it will be important for you. Okay, so it can be considered as a static GK, right? Okay, it can be current GK also. It depends upon the scenario. See, 1 year back there was a news regarding RCEP, for which I'll be making video also, right? And that is called as a Regional Comprehensive Economic Partnership. Okay, so Regional Comprehensive Economic Partnership is very much linked to ASEAN actually. In fact, all the members of ASEAN are the members of RCEP, and other are also members. Okay, so that is why in order to understand RCEP, ASEAN is important. Second thing is very I would say 1 year back, India has opted out of RCEP. So in earlier, India had decided to join RCEP, but later on India backtracked it because of some reasons. So we are having in loss. So that is why we decided कि हम लोग को नहीं रहना RCEP में. ठीक है? Yes, the Sahil Shukla is writing ASEAN Summit for Myanmar. Yes, yes, that we'll be discussing today. So ASEAN is in news because of ASEAN Summit also. Okay, so that is why this topic becomes more important. Now, the topics that we will be learning today is first, what is Southeast Asia? So first we'll be learning is Southeast Asia कहाँ पर है, ठीक है? Then we'll be learning what is ASEAN. ASEAN क्या होता है? Then we will be learning about ASEAN members, ठीक है? Then we will be learning about ASEAN flag and emblem, ठीक है? फिर हम लोग जानेंगे ASEAN Secretariat के बारे में. And then we will have comprehension based uh, on the comprehension based question on the latest CLAT pattern. Okay. Okay, there is a request. Please do not talk within yourselves, because what happens is sometimes it becomes difficult for me to teach you. Okay, so this is the map of Asia. We are talking about the Asian continent. So roughly we can say like this. So this is you can say an Asia, roughly, right? Asian continent or Asia, जो भी आप कहें इसको. ठीक है? Okay. Now, we'll be talking about the West Asia, South Asia, and Southeast Asia to understand more. So I am zooming this area. Okay. अभी हमने एशिया जान लिया, अब हम लोग zoom करते हैं. Okay. So now let's talk about the West Asia. So roughly this region is called as you can say West Asia. Roughly I'm saying
only to remember all the countries name कि कौन कौन आता है कौन कौन नहीं. ठीक है. Now this region is called as South Asia. Okay. ठीक है. We have talked about the SARC, right? I have made the video on SARC also. So SARC includes all the South Asian nations. ठीक है. And this region from Myanmar, I mean the northeast of India, after the border, you can say from Myanmar, ये वाला पूरा region, this region is called as Southeast Asia. ठीक है, clear हो गया? Okay. उधर ऊपर भी ईस्ट एशिया है, नॉर्थ एशिया, उस पर हम लोग नहीं जा रहे हैं, बस अभी लोग ये तीन चीज समझ रहे हैं. Is it clear? I hope so. So here is West Asia, here is South Asia, here is Southeast Asia. So आज का जो हम लोग का टारगेट है वो ये पढ़ना है. So यहाँ से म्यांमार से लेके लास्ट तक ये this is our target today. That is called as Southeast Asia. So it is written like SEA. ठीक है, ये हम लोग का आज टारगेट है, आज ये पढ़ना है. Sir, that one can we call it Central Asia to all that stands once. See, Central Asia is these nations. Yes, Turkmenistan, Tajikistan, Kyrgyzstan. These nations are called as Central Asia. Okay, someone was asking, so let me explain. इसको Central Asia. Okay. Now let's move further. So आज हम लोग को साउथ ईस्ट एशिया पढ़ना है और इसी से रिलेटेड चीजें पढ़ना है. ओके, सो दिस यू कैन सी दिस इज नॉर्थ ईस्टर्न पोर्शन ऑफ इंडिया और नॉर्थ ईस्ट इंडिया वी कॉल इट एज, राइट? नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया. ठीक है. सो ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ इंडिया वी हैव अ बॉर्डर विद म्यांमार. सो हम लोग का म्यांमार से शुरू हो जाता है साउथ ईस्ट एशिया यहाँ से, एंड इट गोज लाइक दिस. ठीक है, इज इट क्लियर? दिस इज साउथ ईस्ट एशिया. व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग यू? बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सर ये क्लास ऐप में अवेलेबल नहीं है. हाँ, यस, इट मे नॉट बी अवेलेबल ऑन ऐप. यू हैव टू कम ऑन यूट्यूब, राइट? अब यूट्यूब पे आ जाओ. ओके, so now so Southeast Asia is crystal clear. Now let's talk about ASEAN. So अगर आप ASEAN में देखेंगे तो ये तीन वर्ड क्लियर हो गया. SEA means Southeast Asia. मैंने बता दिया, और कौन सा रीजन है वो भी बता दिया. ठीक है. Now when we say ASEAN, it stands for Association of Southeast Asian Nations. So M से nations हो गया, A से association हो गया. Okay, this is the definition of ASEAN. It is an economic union comprising of 10 member states in Southeast Asia. ठीक है. तो इधर जो 10 मेंबर है इसमें के, उसके मिला करके एक आसियान बनाते हैं, और इट इज एन इकोनॉमिक यूनियन. ओके, इट इज वेरी सिमिलर टू, यू कैन से, यूरोपियन यूनियन. सिमिलर टू, आई एम सेइंग. ठीक है. which promotes intergovernmental cooperation, facilitates economic, political, security, military, educational, and socio-cultural integration among its members and other countries in Asia. Okay, इसका मतलब क्या हुआ? एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है. इट मींस इट्स मेंबर्स आर डिफरेंट गवर्नमेंट, यानी कई सारे गवर्नमेंट मिलाकर के इसके मेंबर्स हैं, जो कि फैसिलिटेट करते हैं इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सिक्योरिटी, मिलिट्री, एजुकेशन, सोशल कल्चरल इंटीग्रेशन. यानी कि इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हो. इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का मतलब क्या हुआ? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो, ताकि इजीली गुड्स इधर से उधर आ सके. देयर शुड बी नो कस्टम ड्यूटी एंड ऑल दैट. आई हैव एक्सप्लेन्ड इन द प्रीवियस वीडियोस. फॉर एग्जांपल इन ब्रेक्सिट एंड सार्क, मैंने एफटीओ को डिटेल में एक्सप्लेन किया है उस वीडियो में. ठीक है, आप जाके देख लीजिएगा. तो पॉलिटिकल यूनियन, लेसर बाउंड्री हो, राइट? इजीली मूव कर दे आदमी विदाउट वीजा एंड पासपोर्ट एंड ऑल दैट. सिक्योरिटी, मिलिट्री, इट मींस कि सारे कंट्री, ऑल कंट्री शुड फाइट टुगेदर टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म एंड ऑल दैट. एजुकेशनल एंड सोशो कल्चरल, it means educational. Let's say for example they can have Southeast Asia University, ऐसी यूनिवर्सिटी जिसमें सारे हर कंट्री के लोग आके, 10 कंट्री के लोग आके पढ़ पाए, राइट? सो दिस इज द वेरी आइडिया. ओके, एंड इट इज नॉट ओनली विद इन those 10 nations but with the other nations of Asia. So they are talking about other countries in Asia. इसका मतलब क्या? It means ASEAN not only have good relation within themselves but with, let's say, for other nations. For example, ASEAN has a good relation with India. ठीक है. So ASEAN as a 10 member block talks to India. ठीक है ना? या उससे जो आप समझ लीजिए एक तरह से एक रिलेशन है. ASEAN can have good relations with the entire European Union. ठीक है, इस तरह ASEAN जो है वो बात करता है. और ASEAन can have a good relation with SARC और कैन से वेबस्टैक. इस तरह भी होता है, यानी कि एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन का दूसरे रीजनल ऑर्गेनाइजेशन से गुड रिलेशन है. ओके, इट कैन विद वन कंट्री आल्सो, इंडिया. द एंटायर 10 नेशन ब्लॉक कैन टॉक विद यूएसए. इस तरह भी होता है कि 10 नेशन ब्लॉक जो यूएसए से बात करता है. ओके, इज इट क्लियर? समटाइम्स ASEAN nations talk with China, all the 10 nations together. So this is the very idea.
And in fact, this is more successful. ASEAN is considered as more successful than SARC or BIMSTEC. Okay. Now let's talk further. Now, when we are talking about ASEAN, let's talk about the ASEAN establishment. Okay. ASEAN was established on 8 August 1967 in Bangkok, Thailand. Okay. And with the signing of ASEAN Declaration, जिसको हम लोग Bangkok Declaration भी कहते हैं, by the founding fathers of ASEAN, namely Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, and Thailand. Okay. So what is the case in 1967? In 1967, there was Bangkok Declaration. There was Bangkok Declaration. Okay. And initially there were 5 members, okay, of ASEAN. Later on, what happened was later on, 5 more members got added. ठीक है, 5 लोग और जुड़ गए, नहीं 5 country, and now it has become 10 member. We'll discuss all those 10 member nations. Okay, so this is the case. So later on, these nations did join, and now we have today 10 member ASEAN states of ASEAN. ठीक है, is it clear? Now, सर बैंकॉक डिक्लेरेशन से तो बिम्स्टेक बना रहा है ना? नहीं नहीं, बैंकॉक डिक्लेरेशन इज रिलेटेड विद आसियान. ओके. नाउ, so these are the 5 member. You don't need to remember कि कौन सा 5 था, कौन 5 बाद में ऐड हुआ. बस you should have idea कि 1967 बैंकॉक डिक्लेरेशन हुआ, जिसके रिजल्ट में आसियान बना, और अब जो है शुरू में 5 members थे, अब 10 members हो गए. ठीक है. नाउ, एम्स एंड पर्पसेस. तो इसका एम क्या है हम लोग जान गए, बट थोड़ा और आइडिया ले ले. टू एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ. इसका मतलब क्या हुआ कि ऑल द मेंबर नेशंस शुड collectively help each other to accelerate economic growth. कैसे free trade agreement as examples, social progress, cultural development. So it is said that all the 10 members have more or less same culture. तो लोग चाहते हैं कि अपना 10 मेंबर मिलकर के एक साथ कल्चरल डेवलपमेंट हो, रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी डेवलप हो. ठीक है, रूल ऑफ लॉ, रेस्पेक्ट फॉर जस्टिस, रूल ऑफ लॉ, ये सब चीजें हो. ठीक है. सो उसके कई सारे माध्यम है. सो कलेक्टिव सिक्योरिटी की बात, आई हैव टॉक्ड अबाउट द कलेक्टिव सिक्योरिटी. ओके. Like for example, collectively fighting insurgency, terrorism, and all that. So that is the very idea of regional peace. ठीक है, clear है? अच्छा, to provide assistance to each other in the form of training and research facilities. So what they have done is they have come up with their own universities, like Southeast Asia University. ठीक है ना? So they can have their own research center, Southeast Asia Research Center. ठीक है, I'm not explaining in detail because उतना important नहीं है आप लोग के लिए. Okay. Now, it further also says कि they are talking about the agriculture and industry में फायदा हो, because these nations are agricultural nations. ठीक है, so उनको फायदा हो इस चीज में, ताकि सारे जो 10 nations है वो सारे 10 nation मिल करके you can have you can say free trade agreement or any such agreement that will be helpful or beneficial for all those countries. ठीक है. साउथ ईस्ट एशियन स्टडीज मैंने बता दिया, साउथ ईस्ट एशियन स्टडीज. ठीक है, क्लोज एंड बेनिफिशियल कोऑपरेशन विद इंटरनेशनल एंड रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, दैट आई हैव एक्सप्लेन्ड यू, राइट. कि मतलब ये हुआ कि आसियान का सार्क से, ओके, बिम्स्टेक से, यूरोपियन यूनियन से भी, और अदर अदर रीजनल ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड नेशन से गुड रिलेशन हो. दिस इज द एम ऑफ द आसियान. ठीक है, आई होप इट इज क्लियर. देयर इज अ काइंड रिक्वेस्ट, प्लीज डू नॉट टॉक विद इन योरसेल्व्स. नो, व्हाट इज हैपनिंग इज आई एम अनएबल टू रीड द जेन्युइन कमेंट्स. ठीक है, तो आप लोग आपस में नहीं बात करें. दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट. Now, we are talking about the 10 members, right? कि 10 member कौन है? So these are the 10 members: Brunei, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thailand, and Vietnam. Okay, and 2 are actually observers: Papua New Guinea and Timor Leste. Okay, now let's talk about this. This is you can say India. Okay, okay, and this I have already said. This green is called as Southeast Asia, है ना? Okay. Now there are 2 nations which are observer. आप देख रहे हो पापुआ न्यू गिनी और तिमोर लेस्टे. So this one is Papua New Guinea, PNG. Okay. So this is gray because it is not the member. और यहाँ पर एक कंट्री है तिमोर लेस्टे. ठीक है, वो भी जो है वो ये है, क्या कहते हैं, ऑब्जर्वर है. सो इसीलिए उसको डार्क नहीं किया गया. तो रेस्ट ग्रीन मेंबर्स आर द मेंबर्स. ठीक है, क्लियर है? Okay. So yes, this is the ASEAN map.
These are the 10 member nations. Okay, the first one is Myanmar. Okay, here is Myanmar. Okay, second is this orange one is Thailand. The third one is here, you can see the light blue, Cambodia. The fourth one is the light green, and that is Vietnam. The fifth one is yellow one, and that is the Laos. ठीक है, ये पांच हो गया. अब आप देखो, this one is Philippines. ठीक है, sixth one. यहाँ पर एक छोटा सा येलो कंट्री है, this one is Brunei, seventh one. Okay, now यहाँ पर एक छोटा सा कंट्री आप देखो ये, this one is eighth one, and this is you can say Singapore, ये वाला. ठीक है, ये सिंगापुर है. 8 हो गया. 2 more are left. So please be cautious. This one, ये वाला और ये वाला मिला करके. Oh, okay. These two comprises of Malaysia. Okay, same color. You can say the purple color is Malaysia, and the blue one. इतने सारे island है, एक, you can say दो, तीन, कई सारे island है. These all blue one are Indonesia. Okay, ठीक है. Okay, is it clear? Sir, observer मतलब क्या होता है? Yes, observer means they can attend the meeting but they cannot have a right to vote. Only members have the right to vote. ठीक है? Okay. So is it clear? Is this topic clear? The 10 member? I hope it is clear. Okay. Okay. Please do not talk from within yourself. Now, so please press the like button, comment, share with others, subscribe to the channel. Okay. Now, let's move on to the ASEAN Association of Southeast Asian Nation, the flag. So this is the flag, and this is the emblem of ASEAN. Is it clear? Second thing is, what is the motto? This is the motto: one vision, one identity, one community. Okay, so this is the vision. एक vision है, एक identity और एक community. In all the 10 nations wants to have to represent one community, one identity, and one vision. ठीक है. Second thing, उनके national anthem जो वो है the ASEAN way. This is their you can say national anthem. So the 10 member countries have come up with their you can say anthem also. Now let's talk about, do we have to remember all the nations? नहीं, 10 याद नहीं रखना है, but you should have an idea. Okay. मोटा मोटी आइडिया होना चाहिए. The secretariat, we should talk about the secretariat, and the secretariat is in Jakarta, which is the capital city of Indonesia. ठीक है. And what you have to know is membership, you know, we have discussed it, and you have to know the secretary general. So Lim Jok Ho is the secretary general that you have to know. Sir, PDF मिल जाएगी ना क्लास की? Okay, I'll make arrangement for that. Now, as we have already said that they have a lot of things. For example, they have South Asian Games, ASEAN University, ASEAN School Games, ASEAN Para Games, ASEAN Footballs, various other things. That is not very important. They have their own television channels and all that regarding it. Okay. That is not very important. That is why I'm not explaining in detail. ठीक है, हम ज़्यादा detail में नहीं जा रहे. Now, there is something called as Asean Summit, and Asean Summit is a biannual meeting held by the members of ASEAN. तो क्या होता है कि एक साल में two or twice in a year. ठीक है ना? इन एक साल में दो बार होती है. That is called as biannual summit. Okay, in relation to economic, political, security, and social, cultural development of Southeast Asian nation. So हर एक साल में you can say दो बार, यानी हर 6 महीने पे ASEAN summit होता है. तो अभी recently एक summit होने वाला है. Oh, and that is why it was important. And explain you why. Okay, so these are the, you can say the member states, and the, you can say head of the state also. You can take the screenshot later on. Okay. Okay. So this is the ASEAN Secretariat located in Jakarta, the capital of Indonesia. You can see this image, and this is the closure one. It is written, you can say building पे लिखा हुआ Association of Southeast Asian Nation. ठीक है. और yes, this is India. This entire region is Southeast Asia, जैसा कि मैंने बताया है. So these, ये सब जितने islands हैं, ये इंडोनेशिया के आइलैंड मैंने बताया. ओके, और इसी में एक आइलैंड है यहाँ पर. ओके, जावा आइलैंड, और इसी में एक जगह है जकार्ता. You can say the heritage building ASEAN Secretariat is located. So let's see where exactly it is. So this is India. ठीक है, और हम लोग चल रहे हैं ASEAN Secretariat की ओर.
तो ये जो बिल्डिंग है ये आसियान सेक्रेटेरिएट है जो कि यहाँ है। ओके, क्लियर? नाउ लेट्स मूव फर्दर। आसियान में इंडिया का कुछ रोल है क्या? यस, इंडिया हैज अ गुड रिलेशन विद आसियान, यू कैन से। आई सेड ना कि आसियान का कई नेशन से रिलेशन है, सो इंडिया हैज, यू कैन से, गुड रिलेशंस। ओके, okay, so this is the Secretary General of ASEAN, and his name is Lim Jok Hoi, and he is since 1st January 2018. Okay. Now, Secretary General means you can say head of the Secretariat. ठीक है, the Secretariat के head officer होते हैं. That is called as Secretary General. Okay. Now, let's talk about the nuclear free ASEAN. So there is a concept called as nuclear free ASEAN. उसमें उन लोगों ने 1995 में they decided that Southeast Asian Nuclear Weapon Free Zone Treaty was signed to turn Southeast Asia into a nuclear weapon free zone. इसका मतलब यह है कि आसियान जो है न्यूक्लियर फ्री वेपन जोन हो गया। इन सारे नेशंस ने ये डिसाइड किया था। हाँ, हालांकि सिंगापुर उसमें एब्सटेन कर गया था, वोट नहीं किया था। ओके, तो मतलब उन लोगों ने ये डिसाइड ये लिया था कि हम लोग को जो है ये पूरा आसियान जो है न्यूक्लियर फ्री, कोई न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएगा। दिस इज द वेरी आइडिया। ओके, एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड एज आसियान वे। ओके, द आसियान वे रिफर्स टू द, एक तो आसियान वे का मतलब हो गया कि उनका एक ये है नेशनल एंथम है। सेकेंड उनका ये मतलब हो गया दिस इज अ वे टू टॉक टू ईच अदर in order to and that is called as compromise, consensus and consultation in the informal decision making। मतलब ये हुआ आसियान वे का कि अगर दो कंट्री के बीच लड़ाई हो गई है तो उसको कैसे सुलझाया जाए, सो कंप्रोमाइज करके, कंसेंसस करके, कंसल्टेशन करके। इफ देयर इज अ टसल बिटवीन द टू नेशन विद इन द आसियान, दे विल सॉल्व इट थ्रू कंप्रोमाइज, कंसेंसस, कंसल्टेशन, नेगोशिएशन। बातचीत करके मसला हल करना, दैट इज द वेरी आइडिया ऑफ आसियान वे। Okay, now there is something called as free ASEAN free trade agreement also। ठीक है, उसमें क्या होता है कि there will be no custom duty। ठीक है, और क्या होगा, मूवमेंट ऑफ गुड्स विल बी इजियर, मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विल बी इजियर। ठीक है, सो गुड्स एंड सर्विसेज का जो मूवमेंट हो बहुत आसानी से होगा। ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी कॉल इट एज आसियान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इज इट क्लियर? Okay, so I'm not going to explain what exactly is free trade agreement because I have already explained you in these videos, SARC and Brexit video. Okay, is it clear? Now, you can watch these videos if you have not watched. ASEAN ने इस दोनों में FTA को explain किया है डिटेल में, ठीक है ना? Now, let's move further. Okay, there is an article in Scroll and that says why SARC has not been able to replicate the success of European Union or ASEAN। मतलब यूरोपियन यूनियन और आसियान दे बोथ आर मोर सक्सेसफुल एज कंपेयर टू सार्क। ठीक है, ये इतना सक्सेसफुल नहीं है, ये ज्यादा सक्सेसफुल है। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन सार्क दैट सार्क इज नॉट वेरी सक्सेसफुल। ओके, नाउ व्हाई इज आसियान न्यूज? बिकॉज देयर इज अ रिसेंटली आसियान समिट दैट इज गोइंग टू बी हेल्ड रिसेंटली। ठीक है, लेकिन रिसेंटली वन मेंबर ऑफ आसियान एंड दैट इज म्यांमार इज नॉट इन अ गुड स्टेट, यू कैन से। तो हमने बताया है इस वीडियो में भी कि म्यांमार को हुआ है 1 फरवरी को दिस ईयर, and Myanmar what has happened is the democratically elected government has been thrown away by the military dictator। Okay, and this is the very reason, in fact, protests are going on, many people have been killed, and I hope you are aware। So that is why ASEAN summit is going on। So इस मसले को, this solution should be there in ASEAN summit, so that is why it was important। You can say this article from Daily Sabah says EU expands sanctions against Myanmar Janta ahead of ASEAN summit। इन्हें भी ASEAN summit होने वाली उससे पहले ही sanction लगा दिया। Sanction means embargo। I have explained this। Or you can say freedom, restriction in trade। You can say restriction in trade, short में कह सकते हैं। So Myanmar Janta means Myanmar's military। यूरोपियन यूनियन ने म्यांमार के मिलिट्री के खिलाफ कई सारे ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए। ओके, similarly, there is an article from Reuters very recently, April 28, says ASEAN calls summit on Myanmar as EU widens sanction। ठीक है, यानी आसियान ने अभी समिट बुलाई है रिसेंटली, जैसे ही यूरोपियन यूनियन ने सैंक्शन को वाइडन कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं यूनाइटेड नेशंस चीफ यानी यूएन सेक्रेटरी जनरल, वी आर टॉकिंग, हाईलाइट्स की रोल ऑफ आसियान एशियन रीजनल ब्लॉक। सो वो एशियन रीजनल ब्लॉक आसियान की बात कर रहे हैं कि आसियान का बहुत बड़ा रोल होगा म्यांमार क्राइसिस को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, आसियान का
बहुत बड़ा रोल होगा म्यांमार क्राइसिस को सॉल्व करने के लिए। क्यों? इसलिए कि म्यांमार इज अ मेंबर ऑफ आसियान, ठीक है, इसीलिए। ओके, now let's talk about this article. Myanmar जनता लीडर confirmed to attend ASEAN meet थाई गवर्नमेंट। इसका मतलब कि म्यांमार जनता यानी मिलिट्री, म्यांमार के जो मिलिट्री के जो लीडर हैं, he will come to the ASEAN summit. So very recently ASEAN summit is going to happen. उसमें जो मिलिट्री लीडर हैं म्यांमार के वो भी आएंगे, ये बता रहे जा रहा है। अर्लियर क्या होता था कि डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड मेंबर्स आते थे मीटिंग में, राइट? ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कंप्रीहेंशन बेस्ड क्वेश्चन। देखो क्या होता है, इसमें हम शॉर्ट में बताए थे, जैसे फॉर एग्जांपल कोई मीटिंग होती है सार्क की, सो इंडिया को रिप्रेजेंट कौन करेगा? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मतलब डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड आदमी जो होते हैं ना वो रिप्रेजेंट करते हैं कहीं भी। आर्मी चीफ ऑफ इंडिया जनरली नहीं जानते, ठीक है। सो इन द सिमिलर फैशन अगर म्यांमार में डेमोक्रेसी है तो म्यांमार का जो प्राइम मिनिस्टर होगा या प्रेसिडेंट होगा या स्टेट काउंसलर होगा वो मीटिंग अटेंड करेगा आसियान की। लेकिन चूंकि म्यांमार में मिलिट्री को हो गया है, इसीलिए जो आर्मी आर्मी चीफ है वो आसियान की समिट अटेंड कर रहे हैं। दिस इज व्हाट इट मींस, ठीक है। इनकम्बेंट मींस जो अभी फिलहाल है, करेंटली। जैसे अगर हम कहें इनकम्बेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो इट मींस नरेंद्र मोदी, यानी अभी कौन प्राइम मिनिस्टर है, दिस इज कॉल्ड इनकम्बेंट, ठीक है। Now, let's talk about the comprehension-based question. And this I have taken an article from Diplomat, The Diplomat. It's a very famous international relation newspaper, 16th April, and it says, a special ASEAN summit on Myanmar set for April 24. So 24 अप्रैल को एक special ASEAN summit होगी. Okay. Now, let's read the article. April 24 has been confirmed as the date for ASEAN's long-promised emergency meeting on the crisis in Myanmar. देखिए इमरजेंसी मीटिंग है, क्यों? इसलिए कि म्यांमार में क्राइसिस हो गया, 1 फरवरी को मिलिट्री को हो गया, तो इसीलिए आसियान मेंबर्स ने एक से मीटिंग बैठाई है। द न्यूज वाज ब्रोकन ऑन थर्सडे बाय थाई पीबीएस वर्ल्ड, यानी ये न्यूज एजेंसी है थाईलैंड की, which noted that the leaders from all 10 nation states including Myanmar's coup leader General X are scheduled to attend the mini summit in Jakarta। यानी फुल समिट है, मिनी समिट है, छोटी समिट है, जिसमें 10 मेंबर नेशंस आएंगे। उसमें म्यांमार के जो मिलिट्री को के लीडर है जनरल एक्स, आपको बताना वो एक्स कौन है, जो कि जनरल यानी आर्मी चीफ है जो म्यांमार के, वो भी इसमें आएंगे, ठीक है। Plans for a special ASEAN meeting have been in the works for some weeks, spearheaded by Indonesia and its foreign minister Retno Marsudi, whose diplomatic push has been supported by Malaysia, Brunei, and Singapore. The governments of Malaysia and Brunei announced that a meeting was planned on April 5, following a meeting between PM Muhyiddin Yassin and Hassanal Bolkiah, the Sultan of Brunei, which currently holds rotating chairmanship of Southeast Asian Bloc। देखो इसका मतलब बताते हैं शॉर्ट में, यानी कि ये बात हुई है कि स्पेशल आसियान मीटिंग होगी इन सम वीक्स, ठीक है। दूसरी बात है कि गवर्नमेंट ऑफ मलेशिया और ब्रूनी ने ये अनाउंस किया है, 5 अप्रैल को ये प्लान किया है। और कौन दोनों हैं? सो मलेशिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं मोहिउद्दीन यासिन, और ब्रूनी के जो हेड हैं यू कैन से हसनल बोल्किया, जो सुल्तान है आप कह सकते हैं, इन दोनों ने मिलकर ये डिसाइड किया है कि आसियान समिट रिसेंटली होगी, ठीक है। नाउ दूसरी चीज ये कि द करेंटली होल्डिंग द रोटेटिंग चेयरमैनशिप ऑफ साउथ ईस्ट एशियन ब्लॉक। इसका मतलब ये हुआ कि रोटेटिंग चेयरमैनशिप का मतलब होता है यानी जो 10 मेंबर नेशन है उसमें हर साल किसी को, एक साल कोई और रहेगा, लेट से 2020 में कोई चेयरमैन है, सो 2021 में कोई और कंट्री हो जाएगा, फिर 2022 में कोई और कंट्री हो जाएगा। सो अभी कौन होल्ड कर रहा है? ब्रूनी होल्ड कर रहा है, और उसके हेड कौन है? सुल्तान हसनल बोल्किया। तो इसका मतलब ये कि ब्रूनी अभी चेयरमैनशिप में चेयरमैन है आसियान ब्लॉक का इस साल के लिए, और उसके जो हेड हैं हसनल बोल्किया, ये जो सुल्तान है, उन्होंने और मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर ने मुहिउद्दीन यासिन ने मिलकर के डिसाइड किया है। ओके, now in a statement the two leaders claimed that it remains in ASEAN's greater interest to see Myanmar resolve the crisis and regain stability। तो टू लीडर्स यानी वो मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर और ब्रूनी के सुल्तान ये कह रहे हैं कि क्राइसिस रिजॉल्व करना बहुत जरूरी स्टेबिलिटी के लिए एशियन रीजन में, आसियान रीजन में। The statement also expressed its customary concern for the deteriorating situation inside the country and urged all parties to refrain from instigating further violence। ठीक है, सो इन लोगों ने स्टेटमेंट ये जारी किया कि जो डिटोरेटिंग कंडीशन है म्यांमार की उसको, उस पर कंसर्न जाहिर किया, और ये कहा कि टू रिफ्रेन फ्रॉम, और ये कहा कि लोगों को अपील किया है कि वायलेंस ना करे, स्पेशली म्यांमार मिलिट्री से, ठीक है। दिस इज व्हाट दे सेड।
So now let's talk about the question number one. And the question number one says, name the general of Myanmar who has been replaced by X in the passage. And your options are Min Aung Hlaing, Maid Su, Aung San Suu Kyi, Hogyoki Aung San. ठीक है, आपको ये जवाब देना है कि यहाँ पे जो जनरल की बात हो रही है कि जो 10 आसियान मेंबर स्टेट्स के मेंबर आएंगे इस मीटिंग में, उसमें म्यांमार के कू लीडर भी होंगे जनरल एक्स, तो उनका नाम क्या आपको बताना है. यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन. ओके, एनीबॉडी? Yes, majority of the people are yes, Raj, Gohar, Kaur, Randhawa. Everybody is saying A. Yes, majority of the people are saying A. Yes, A is the right answer actually. Ming Aung Hlaing is the right answer. Okay, now let's talk about the question number two. Yes, this person Ming Aung Hlaing is the right answer. Okay, and he is the army chief. You can say army chief of Myanmar. Okay. Second thing is, this lady was very famous actually, Aung San Suu Kyi. So she was the state counselor. मैंने उस वीडियो में एक्सप्लेन किया है, काउंसलर ऑफ म्यांमार बिफोर मिलिट्री कू. ठीक है ना, बिफोर मिलिट्री कू. ओके, एंड दिस माइन सो हैज बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ म्यांमार. अभी जो मिलिट्री कू आया उसके बाद ये प्रेसिडेंट बन गए, पहले ये वाइस प्रेसिडेंट थे, करेंटली ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ म्यांमार. Okay, now let's talk about the question number second. The question number second says, which declaration led to the formation of ASEAN? And your options are Jakarta Declaration 1957, Bangkok Declaration 1967, Myanmar Declaration 1997, and Bangkok Declaration 1987. Please answer this question. People are writing two ka B, majority of the people. Some have said D, but majority of you have said B. Yes, Bangkok Declaration 1967 is the right answer actually. I have shown you this ASEAN establishment, and 1967 Bangkok Declaration is the right answer. ठीक है, and उस वक्त 5 members थे, later on 5 more were added. ठीक है. Now let's talk about the question number 3, and the question number 3 says, the Secretariat of ASEAN is situated in. The options are capital of Myanmar, capital of Brunei, capital of Indonesia, and capital of Malaysia. Yes, majority of people are saying C. Yes, C is the right answer. Capital of Indonesia, which is Jakarta, is the right answer. Okay, what is the capital of Myanmar? Anybody? Naypyidaw is the right answer. Okay, capital of Brunei is Bandar Seri Begawan. Go and read about it and find out the capital of Malaysia. Okay. Acha, one more thing. So I was referring to this. People were asking, and the confusion was regarding it. Yes, sir. Bangkok Declaration was related to BIMSTEC also, right? Yes, this may be also correct, but this is 1997. There was a summit in Bangkok, जिसकी वजह से वो BIMSTEC एक्चुअली BIMSTEC नेम चेंज हो गया. ओके, ठीक है. सो ये 1997 में एक समिट हुई थी जिसकी वजह से BIMSTEC नाम पड़ा. अर्लियर इट्स नेम वाज समथिंग एल्स, राइट? ओके, सो आई एम क्लैरिफाइंग इट बिकॉज पीपल मे गेट कंफ्यूज. ये 1967 में बैंकॉक डिक्लेरेशन हुआ था. ठीक है, क्लियर है ना? इज इट क्लियर? क्लियर है? यस सर, साहिल शुक्ला सिंह. यस, ठीक है ना. सो पहले बिस्टेक था, BISTEC, फिर वो बिम्स्टेक बन गया. ठीक है, तो दोनों 1997 में हुआ, सब बैंकॉक ही में हुआ था, बट वो 1997 की बात है, ये 1967 की बात है, तो इसीलिए मैंने क्लैरिफाई कर दिया. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन. Yes, we have discussed about the Secretariat of ASEAN, which is in Indonesia,
and this is Jakarta. We have talked about it. Now, yes, one more news. Just for information purpose, Indonesia has decided to change its capital, Jakarta. इसलिए कि वो डूब रहा है एक्चुअली. So picks Borneo Island. तो Borneo Island में कोई बना देंगे. जैसे for example, I have told you this entire region और ये वाला आधा portion is Indonesia. So Indonesia has decided कि यहाँ कहीं पर कैपिटल बनाया जाए. इसलिए कि this island को हम लोग बोर्नियो आइलैंड कहते हैं. बोर्नियो आइलैंड, ठीक है. इसमें जो टॉप हाफ है ये मलेशिया है, ये वाला पोर्शन. यहाँ पे इंडोनेशिया है नीचे और यहाँ पर ब्रूनी है. मैंने एक्सप्लेन किया है सबको, ठीक है. So this was in news, तो हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया. Okay. Now, yes, Malaysia is Kuala Lumpur. Somebody said the capital. Yes, यहाँ पर आप देख सकते हैं. ये यहाँ पर जकार्ता फिलहाल दिस इज द कैपिटल सिटी. ओके, इसके कई सारे आइलैंड है इंडोनेशिया के. That we are not going in detail because that is not very important. Now the question number 4 says which of the following is not the member of ASEAN? And your options are Myanmar, Mauritius, Thailand, Laos. Please answer this question. Anybody? Yes, B. Sita Mahalakshmi, Unbeatable, Sahil Shukla, Rosha Pandey, Shalu Kumar, Risha Sharma. Yes, B is the right answer. So this lies in Africa actually. ठीक है. यहाँ देखते हैं. देखो यहाँ से इंडिया के नॉर्थ ईस्ट इंडिया से लेके ये पूरा जो है वो साउथ ईस्ट एशियन नेशन है. ठीक है. और मॉरिशस लाइज समवेयर हियर. यहाँ पे है मॉरिशस. Which is a part of African continent. ठीक है. So ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का पार्ट है. Okay. So Mauritius is the right answer. Yes, unanimously people are writing. Yes. I'm going to take everyone's name because now the question number 5 says how many members of ASEAN are the members of BIMSTEC? Now this is the googly and your options are 2, 3, 4 and 0. I'm checking it here whether you know all the member of BIMSTEC or not. If you know the member of BIMSTEC, I think you can very easily answer this question. Sita Mahalakshmi, yes, Mauritius is an African continent. Yes. Himanshu is saying 4. Samarth Varshne is saying 3. Dharma Mangalam is saying C. 5 plus C. Gonika Pundir. Gonika is right actually. A is the right answer. Yes. 2 is the right answer. Only one person has given the right answer. C. I have talked about the SARC members and the BIMSTEC members in detail. Okay. So these are the BIMSTEC member actually. India, Nepal, Bhutan, Bangladesh 4, Sri Lanka 5, 6 Myanmar और 7 Thailand. ठीक है? Is it clear? So these 7 are, you can say, the members of BIMSTEC. Okay. And these, you can see, यहाँ से लेके यहाँ तक are the members of ASEAN. So Myanmar and Thailand are common. Sir, I also said to Divyani, yes, you are also right if you have said. Yes, Gonika, you are right. So Myanmar और Thailand जो BIMSTEC में भी आता है और ASEAN में भी आता है. This is what I was checking you. You know why? Because I have made the diagram of ASEAN many times. और BIMSTEC मैंने बताया था आपको इस वाले वीडियो में. I have told you in this video how to remember the SARC nations very easily and BIMSTEC nations very easily with the help of map. ठीक है? आप जाके इस वीडियो को देखिएगा. So you'll get to know कि कैसे इसको याद रखा जाएगा. Okay, Myanmar and Thailand are the common members. ठीक है? So I hope that you would have liked this video. We'll be coming up with more videos. Like RCEP will be our next video most likely on Sunday. And if you have any query, you can call on this number. We have our new batches for 2022, the batch 4. I have explained to you. Okay. And yes, you can call on these 2 numbers also. We have 20 batches for 2021 also. That is called as crash course. जो कि मैंने initially discuss किया है वीडियो के शुरू में. Okay. I hope that you would have liked the video. Thanks for watching. Please press the like button, share with others because sharing the knowledge increases the knowledge, and subscribe to the YouTube channel.